Viewers, good evening. The Women's Quota Bill was first introduced in the year 1996. Since then, India has seen so many prime ministers, dozens of elections, hundreds of rallies, countless speeches, viewers, and promises. And yet, here we are still debating it, still delaying, still deflecting. And Congress party has been at the center of all this. It's almost like they have perfected the art of promising everything and delivering nothing. First it was Mallikarjun Kharge who raised objections, and now it is Sonia Gandhi herself, the most powerful woman in the party, who is linking this bill to political conditions, to OBC quotas, to census, to timing. Because the BJP is not wrong to call this out as duplicity. Because it is. This is textbook and documented duplicity. This is the same Congress party that had power for decades, decade after decade of governments, majorities, coalitions, you name it, they had it. And the bill went nowhere. It was stalled, it was shouted down, it was torn up on the floor of Parliament. Now Prime Minister Modi has appealed to all parties for consensus. That's a reasonable ask, a democratic ask, you would say. But viewers, consensus cannot be another word for delay. Consensus cannot be a trap where one party keeps moving the goalpost every time an agreement is within reach. Because that is exactly what is happening. Why is the Congress jumping the gun even before the all-party meeting? They always rush to claim credit for women's reservation. But when it comes to watching the talk, Congress always dithers. Sample the reactions, then we open this up. मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो शकुनी चाल चल रहे हैं वो मत चलिए। तो बजाय न्यूज़पेपर्स में ओपेड लिखने के, बजाय सम्मेलन करने के, बजाय मंचों से विपक्ष से अपील करने के, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और जिस तरह से आप बीच चुनाव में एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, आप बंगाल के 42 और तमिलनाडु के 39 सांसदों और तमाम सीनियर लीडर से ये हक छीन रहे हैं कि वो जाकर वहां प्रचार प्रसार कर सके, वो जनता के बीच में जा सके। ये हक आप उनसे छीन रहे हैं। Once again, the government, through Kiran Rijiju ji, the Parliamentary Affairs Minister, has reached out to the entire opposition, particularly Kharge ji and the Congress Party. The Prime Minister has made appeal to all parties, written a letter to them, and even Mr. Kharge was approached by Kiran Rijiju ji as early as 16th of March that conversation and consultation needs to be had with the Congress leaders. Wide consultation and conversation has been had with all the opposition parties because the government is committed, Modi government is committed that there can be no more delay in the implementation of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Let's open this up. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Faizan Kidwai, the national spokesperson of the Samajwadi Party. Dr. Rajkumar Rajan, the national spokesperson of the RJD. Dr. Piyush Joshi, spokesperson of the Aam Aadmi Party. Nikhil Jain, Harshvardhan Tripathi ji completes this panel. Faizan Kidwai, all opposition parties, at least most, barring the AIMIM, in principle agree to the women's quota bill. Now that the Prime Minister has, asked for consensus, as the government has called for an all-party meeting, why are we seeing these delaying tactics? I want to, get your views on record before I, go to Congress and ask Nikhil Jain what he thinks. Good evening, Pranesh. Good evening to you and to the fellow panelists here. See, Pranesh, what the Prime Minister is doing is nothing but yet another sinister plan of the Honorable Prime Minister to steal away legitimate rights from PDA, from women. This is what our PM, that is the propaganda mantri, does all the time.
First of all, he kept on delaying the 2021 census. Then he waited for a good 9.5 years to bring in this women reservation bill, and that too just before the general elections. Why so, Pranesh? I'm sure you know, and everybody watching your show, we all know that this was for political gains. See, he deliberately inserted this Article 334A to link women reservation with delimitation and a future census, just to buy more time. Was it required? Not at all, because there were earlier reservation bills also which didn't require such kind of a delimitation or census. Chaliye, he wants census. Then later on, Pradhan Mantri realizes that if there is census, there'll be caste census also. And just to steal legitimate rights from the PDA community, disenfranchise them, Narendra Modi makes a U-turn. Now he wants to avoid a new census. You know what? He wants to go back to the ancient data of 2011 and avoid the census. There's an analysis, Pranesh, kindly don't interject, just let me go through it. It's an analysis by IndiaDataMap.com, which was published in September 2025, which says that PDA community population has grown since 2011. There's a census, if you see the 2011 official census, SCs were 16.6%, ST 8.6%, OBCs were not counted nationally at that time, minorities 14.2%. Pew Research Center analysis of 2021, this is still 2021, says that SCs have grown to 25%, I get that. ST 9%. I get your point. I get your point about the quota within the quota. You know, it's a legitimate demand. You can have that discussion with the government, but why link it to timing? Mr. Kidwai, you just said that, you know, this was done ahead of the last general election. अब कौन से इलेक्शंस आ रहे हैं? शायद आप न्यूज नहीं देखते हैं, आपको पता नहीं होगा वेस्ट बंगाल में और साउथ में और जगहों पे भी इलेक्शन हो रहे हैं. ये इससे कुछ बेनिफिट लेकर के अपनी आगे की रणनीति बनाना चाह रहे हैं. बड़ा पैथेटिक इनका एक तरीका है, प्रणेश. और हम एक साथ साथ एक बात और बता दें आपको, ये जो विमेन रिजर्वेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इनका विमेन एम्पावरमेंट भी खोखला है. अगर आप देख लीजिए जो SIR के जरिए बंगाल में जो वो अलग बात है, लेकिन आप जो आपने जो एक एलिगेशन आपका है कि ये टाइमिंग पे कोई जवाब नहीं है. मैं न्यूज नहीं देखता हूं, मैं इसरो में काम करता हूं. फैजान किडवाई, क्या बोल रहे हैं आप? हम बता रहे हैं सबको कि यहाँ क्या हो रहा है देश दुनिया में, आप मुझे ही कह रहे हैं कि न्यूज नहीं देखते हो. पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आपके पास जवाब नहीं है. निखिल, डोंट स्माइल टू मच. यू थॉट, यू नो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू, सो यू नो यू हैव योर टाइम. You know, Mr. Chidambaram, in a piece just like the one written by Sonia Gandhi, wanted the implementation of the women's quota bill. That was 3 years ago. Rahul Gandhi, you know, face of the Congress party, said it 2 years ago, 2.5 years ago. Let's have it today. His words. Now Sonia Gandhi says the bill is deeply flawed. Mr. Khadge has a problem with timing. Pranesh, first of all, congratulations on your appointment in the ISRO. So let me just walk you up with what is happening in the Women's Reservation Bill, that the Congress has tried to bring reservation for women for decades. And it was the RSS and Jansangh that kept on opposing it. But when the Prime Minister finally took a step forward in September 2023 and said that we are going to reserve 33% seats in the parliament for women, all the opposition parties supported him, but they wanted more discussion so as to implement this reservation in a better manner. But the Prime Minister, after passing the bill in the Lok Sabha and the Rajya Sabha with the support of the opposition, just ran away. For 2.5 years there was no discussion on it, and right in the middle of state elections, and let's not forget that West Bengal is a contest between the BJP and the TMC and the Congress, and the TMC, the incumbent party, is led by a woman. At this point the Prime Minister wants to move forward on this bill. What was he doing for 2.5 years? Let's be very clear that the Prime Minister is trying to gain political brownie points out of it. Of course nothing much is going to come out of it. He's not going to form the government in West Bengal, but let's look beyond the principle. Every time the Prime Minister does something, the principle is great. Black money बंद करना है, बहुत अच्छा. लेकिन सारे नोट बंद कर दूंगा demonetization करके, stupidity. And that is what the problem with the Prime Minister and the BJP is. Now, you also back Faizan Kidwai and believe that this is because of Bengal elections. Only Bengal elections. फैजान भाई knows that, you know, यूपी इलेक्शंस थोड़े दूर हैं, तो अभी बंगाल से ही जोड़ देते हैं. जो पास में उसी से जोड़ देते हैं. At least we can have, you know, something to justify our argument. Nikhil, let me read out to you something that was said in 2010.
to those who ask such questions about quota for OBC women, I would say, and then who prevents you from giving to Muslim women, to OBC women, a seat in the reserve 33%? Who is going to prevent them from doing it? You know who said this? Nikhil, do you have any idea? No, please read. This is Please Sonia go ahead. Gandhi. The year is 2010. You know who opposed it? What is the Dr. year right Rajan's now? party. The Rashtriya Janata Dal. Should I play out what Rahul Gandhi said in 2023? Nikhil, should I play out what Rahul Gandhi said in 2023 about women's quota? Listen to this. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it Push the ball forward and let this thing play out. September 2023, Rahul Gandhi. What is going on, Nikhil? Your viewers will note how, Pranesh, I think your viewers will note how Rahul Gandhi's words have turned out to be prophetic, because the Prime Minister has taken 2.5 years just to go towards the next step. We are not having a discussion when just in 2 weeks' time we will have 33% of the parliament with women in it. We are talking about a stage in the entire process, and the first stage after the passing has taken the Prime Minister 2.5 years. This is nothing but just something to push the can forward. Every time a step is taken in this process, If the you Prime Minister think, will try one to minute, be- Nikhil, if you think the BJP is deliberately doing this, buying time, why don't you call their bluff? Say we are ready to support. Whatever you say, you have our support. Say that. But you can't say that. That's the problem. Sanju Verma, you've heard the Samajwadi Party and Nikhil Jain respond to them. You know, Pranesh, first and foremost, very quickly, I just want to say that this entire cabal of Samajwadi Party and the Congress, which seems to be giving lessons to Prime Minister Modi, और मोदी सरकार ने 2.5 साल के लिए क्या किया, 10 साल के लिए क्या किया, 20 साल के लिए क्या किया, तो ये सुनिए record, track record. For the first time, women's reservation was proposed by our alliance partner today under the then leadership of H.D. Devegowda in 1996. Then Atal Bihari Vajpayee की leadership के तहत 1998, 2002 and 2003 it was proposed. Then under Sonia Gandhi, women's reservation was proposed in 2010. But Sonia Gandhi did not have the political courage of conviction to see it through, because the RJD and Samajwadi Party opposed OPPO-SED, opposed women's reservation. So पहली बात तो ये, RJD Samajwadi Party have no locus standi to lecture on women issues because they have been opposing women's reservation for the longest time. The other very moot point is this. आप सोनिया गांधी बड़े-बड़े ओपेड कॉलम्स लिख रही हैं. सोनिया गांधी caved into pressure from the then railways minister C.K. Jafar Sharif. That is precisely the reason she completely abandoned the women's reservation legislation in 2010-2011, saying कांग्रेस पार्टी से ना हो पाएगा क्योंकि C.K. Jafar Sharif ने मना कर दिया है और हंगामा कर दिया है. The third and very important point, Pranesh, is this. Sonia Gandhi today has lied in her op-ed column. She says that empowerment for women in Panchayati Raj institutions happened thanks to Rajiv Gandhi. Whereas anyone with an IQ of more than 5050 should know Rajiv Gandhi could not empower Panchayati Raj institutions, though he tried in 1989. Finally, the 72nd and 73rd amendments to give reservation to women in Panchayati Raj institutions happened under Narasimha Rao. तो बेकार में राजीव गांधी को सोनिया गांधी जी क्रेडिट देना बंद करिए, इतिहास पढ़िए. But very quickly, I will just say this. What does the proposed amendment to the Women's Reservation Act of 2023 seek to do in this special session that has been called between 16th and 18th of April this week, Pranesh?
The simple point is that the Women's Reservation Act of 2023 linked it to delimitation exercise, linked it to census. But if we link it to census, which will only get completed by 2027 or perhaps 2028, by the time data is collated, there is no way that 2029 Lok Sabha elections will see women's Okay, but reservation Sanju Verma, Act being implemented. How would you answer those who are saying that this is for, Bengal elections? No, I just want to say this. Those who say this is for Bengal elections, let me remind them every 3 months there's a local body or an urban civic body poll, or, there's a state election, 3 to 4 state elections every second year. So please don't say that everything that the Modi government does is with an eye on elections. Very quickly, Pranesh, just 10 seconds. 2004, in the 14th Lok Sabha, there were only 45 women MPs, 8.3% representation. 2009, 15th Lok Sabha, 10.7% representation with only 58 women. Very quickly, 2014, 64 women, 12% representation. 2019, 17th Lok Sabha, 14.4% representation with 78 women. But guess what, Pranesh? Come 2024 in 18th Lok Sabha, the women MPs are only 74 with 13.6% representation. तो जिस मुल्क में आधी आबादी औरतों की हो और वहां पर लोकसभा में 14% से कम women are MPs. Women Reservation Act should have happened yesterday. Someone says, jitni abadi utna haq. Where is that person who gave this slogan? That person is missing in action. Dr. Rajan, what is your party's view on the women's quota? I am sure you are aware of the history, sir. आपकी पार्टी और पार्टी के जो सदस्य रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या इस पे कहा है और किया है? प्रणेश जी, देखिए, महिला आरक्षण बिल महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि समाज के हर वर्ग की जो महिलाएं हैं उसका उत्थान होना चाहिए। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो भी ओबीसी परिवार से ही आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। वो अच्छे से जानते, पूरा देश जानता है कि अभी अभी पहली पीढ़ी जो पढ़ लिख कर आई है, जो अवेयरनेस आई है, जो जागरूकता आई है ओबीसी वर्ग में, अभी अभी आई है। आप जब महिला आरक्षण बिल लाएंगे और कोटा के भीतर कोटा अगर नहीं देंगे, तो दरअसल जो महिला आरक्षण का जो व्यू है, महिला आरक्षण का जो ध्येय है, वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि महिला आरक्षण के नाते अभिजात वर्ग की जो महिलाएं हैं वही राजनीति में आ जाएंगी। ये देखिए जो हाशिए का वर्ग है, ये जो आप कह रहे हैं सुनने में कितना अच्छा लगता है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा कि ये कितने आप कंसर्न्ड हैं अबाउट द डाउन ट्रॉडन इन द सोसाइटी। ऐसी महिला जिनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, इसीलिए आप कह रहे हैं कोटा विद इन कोटा। आप मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब दे दीजिए डॉक्टर राजन। अगर 33% कोटा हो जाता है और अगर आप अपने पार्टी के ऐसे पद पे हैं कि टिकट से आप डिसाइड कर रहे हैं, तो आप पे क्या कोई ऐसा प्रेशर है कि आप मत दीजिए, आप दे दीजिए ना अपने तरफ से। आप कहिए कि 33% में हम कोटा विद इन कोटा, सब कोटा में ही दे देंगे, पूरा 33% आप कोटा में ही दे दीजिए, एससी एसटी ओबीसी दे दीजिए आप। क्या, हाउ डज इट प्रिवेंट अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम doing what they aim to do, which is to empower women? परवेश जी, दरअसल किसी पार्टी की विशेष का मामला नहीं है, मसला नहीं है। मसला राष्ट्रव्यापी राजनीतिक परिदृश्य का है। उस परिदृश्य में सामाजिक महिलाओं की प्रतिनिधित्व का बराबर प्रतिनिधित्व तो चाहिए। तो बराबर। अरे डॉक्टर राजन आप देखिए, आप यहां वहां मत घुमाइए। अगर सही में प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन का इशू है, तो जब बिहार में डेप्यूटी सीएम आप लोग ढूंढ रहे थे, तब तेजस्वी यादव जी की जगह किसी और महिला को बना देते डेप्यूटी सीएम। क्या आपका मोदी जी ने हाथ पकड़ रखा था कि मत बनाइए? नहीं प्रणय जी, आप
प्रणेश जी, आप इस मुद्दे को डाइल्यूट करके दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं। दरअसल क्या है ये समझना असली होगा मुद्दा? तो क्या है चिंता से। असली मुद्दा? यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की हिपोक्रेसी अब सामने आ गई है। अब जब बात आई है 33% कोटा की, तो आप कह रहे नहीं इसमें कोटा चाहिए। 33% पहले कोटा पे अग्री कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी पार्टी वही फॉलो करती है। वही मुश्किल होगा। टू वॉक द टॉक ऑन 33% quota will be difficult. Let me bring Harshvardhan Tripathi ji who tracked this for some time and he will tell us. हर्षवर्धन जी, ये जो मैं उनसे बात कह रहा हूं कि अगर ये जो कोटा विद इन कोटा है, अगर 33% ये अभी पास हो जाता है और ये लॉ बन जाए, तो क्या परेशानी आ रही है किसी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, टू इंप्लीमेंट द कोटा विद इन द कोटा? ये दे दे इनको जिसको टिकट देना है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यही है प्रणेश जी कि जितने नेता ये बात कर रहे हैं, उनको जब कोटा देना था तो राबड़ी जी को कोटा दे दिया था, लालू जी से निकाल के राबड़ी जी को कोटा दे दिया था। उनको लगा महिला कोटा पूरा हो गया। उनको जब देना था तो मीसा भारती को दे दिया, उनको लगा कोटा पूरा हो गया। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी कोटे के तहत जब रोहिणी आचार्य ने मांग लिया तो कोटा नहीं दे पाए। परिवार में, एक परिवार में, और परिवार में भी अपनी मर्जी से तय करने वाले लोग जब कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं तो हंसी आती है। लेकिन पीड़ा की बात दूसरी है। जैसे किसी भी समाज में अगर ऐसे रिजर्वेशन देना पड़े तो उस समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं। उस समाज में हम सब शामिल हैं, हमने सारे अधिकार महिलाओं को दिए, सब कुछ किया, लेकिन पार्टी में रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी में नहीं जा पाया। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता रही, यानी उनसे ज्यादा ताकतवर कौन था? वो तो मुख्यमंत्री ताश के पत्ते की तरफ फेंकती थी। वो तो गवर्नर जब चाहे जिसको अचानक मुख्यमंत्री का दर्जा देती थी, राष्ट्रपति शासन उसको कहते हैं। लेकिन सोचिए, वो भी नहीं कर पाए। कांग्रेस ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका जी का नारा था। क्या हुआ? कहीं नहीं दिया, आधा टिकट कहीं दिया ही नहीं। वो सिर्फ यूपी में किया जहां इनकी गलती से 2 सीटें आई हैं, तो एकदम सही है। वहां एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी विधायक हैं रामपुर खास से, और दूसरे फरिंदा से वीरेंद्र हैं विधायक, तो 2 लोग हैं, तो आधा आधा हो गया। लेकिन सवाल ये क्या है, सीरियस है क्या? और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, वो डिले करना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम इसको 2029 से पहले लागू करना चाहते हैं, तो आप उसके इंप्लीमेंटेशन के तरीकों पर बात हो सकती है। लेकिन जब कोटा विद इन कोटा कहते हैं, तो आप आधी आबादी को, पुरुषों में आपने इतना कुछ कर दिया है, उसके बाद वही करना चाह रहे हैं। दूसरा, 33% जब SC ST के संविधान में उस आरक्षण को दिया गया, तो उसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, वो तो क्लैरिटी है, इतने लंबे समय से वो चला आ रहा है। और कोई भी आरक्षण इस तरह का संविधान ने नहीं दिया है, बाकी कोई आरक्षण होना भी नहीं चाहिए, वो देश को पीछे ले जा रहा है। और जिनको कहा जाता है, जो अभी शायद राजन जी ने कहा, पहली बात तो ये अगड़ा पिछड़ा होना नहीं चाहिए। कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई सवर्ण और ये सब, ये शब्दावली ही बंद होनी चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं टीवी में, क्योंकि डिबेट में बोलना पड़ता है तो कई बार बोलते हैं। लेकिन क्या हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या अगड़ा पिछड़ा जैसी वाहियात शब्दावली का उपयोग होना चाहिए? कोई भी एक पिछड़ा हो सकता है क्या? लेकिन राजनीतिक दल उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। कम से कम महिलाओं में मैं तय करिए, महिला के तौर पर है, उसकी समस्या वही है, उसका अंडर रिप्रेजेंटेशन वही है, और अगर एक आरक्षण आ रहा है तो उसको लागू होने दीजिए। आप अपनी पार्टी में करके दिखा दीजिए। निखिल, 1996 was when the bill was first introduced. Who would you hold accountable for, 3 decades of delay? The BJP? Pranesh, it's quite interesting that when you ask questions of the opposition, you tell them आपको reservation से problem, अगर इतनी problem है इस बिल में तो खुद 33% दे दीजिए. Why don't you turn around and ask the BJP the same question? Why could they not give 33% tickets to women in the Lok Sabha 2024 elections? I have said all political parties pay lip service, all including Prime Minister Modi's BJP. All. Did you hear that? All parties pay lip service. Now, look, 1 minute. You will have to answer for the Congress, Nikhil. Chidambaram in 2023 says Jumla is a Hindi word meaning roughly a tricky act or statement. Women's reservation bill is another Jumla. Now Congress is saying what's the hurry?
Pranesh, the Congress party is the party which has given this country the only female prime minister that it has ever had. The Congress party is the country which has given this country the only female head of a national level political party that it's ever had, and that is Sonia Gandhi. And for the same Sonia Gandhi, the same Narendra Modi said Jersey guy, 50 crore ki girlfriend, Congress ki vidwa, and all sorts of sexist and disgusting remarks. Okay, and then Indira Gandhi, no, 1 minute. The first example about Indira Gandhi, she became prime minister because of this great reservation or empowerment mindset of the Congress party, or because of her surname? Indira Gandhi became the Prime Minister of the country because she was a leader who could lead the people, who could lead the MPs, who could lead the party. She came in with merit, but in a system that allowed for women to rise up, where there was no glass ceiling for women. You look at the BJP right now. Tell me one strong female chief minister that the BJP... Remove the glass ceiling, expose the BJP, back the bill. I told you it's that simple, Nikhil. But walk the talk. Every opposition party is supporting this bill in principle. They are asking for nuances so as to make the implementation of this bill better. But Narendra Modi doesn't want to listen to it because he thinks that he is Donald Trump, or rather he wants to be like Papa Donald Trump. He just wants my way or the highway. You have, in a democracy, you have to listen to all the stakeholders. You have to listen to the opposition. You have to listen to the... Why do you think all-party meeting has been called? And even before that meeting, Mr. Khadge has a problem. Sonia Gandhi, has a problem. Why not go to the meeting? It's like Rahul Gandhi not attending the all-party meeting and then going to Kerala to say, when I was away, they held the all-party meeting. He said that. We have that reaction. On day one, he says, yes, I'll be away. The government has called an all-party meeting. Then a day later, he said something else. Listen to this. Nikhil, you must listen to this. मैं तो वहां नहीं हूंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए. The government called an all party meeting. They made sure that I was in Kerala when they called it. Who's behaving like Trump? Nikhil? Pranesh, on the 21st of March, Rahul Gandhi's program in Kerala for the 25th of March was already announced, and then on the 24th of March... But why lie? Why lie? That's the problem. It's okay to not attend the all-party meeting because of whatever reasons. But why say that they held the all-party meeting when I was away? Sanju Verma, is the BJP scared of the Congress party, or are you, wanting that the Congress party should not be part of this? Pranesh, I did not want to make this personal and I will not make it personal. But Nikhil Jain sitting here and, taking pot shots at the Prime Minister, he should be ashamed. After June 2024, assembly elections were held in 6 states. BJP won 4 out of those 6 with a strike rate of 67%. Congress's track record is ZERO, a big zero, thanks to zeros like Nikhil Jain, who come and spew gibberish on national television. I want to just say one thing. The topic is today Women's Reservation Bill. And Congress party says, हम तो नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं. Priyanka Vadra ran to Hathras saying, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ. But this is the same Priyanka Vadra whose personal secretary abused and thrashed and beat up a woman called Archana Gautam, who was the poster girl of Priyanka Vadra's Ladki Hu Lad Sakti Hu campaign. P.P. Madhavan, the personal secretary of Sonia Gandhi for decades, was charge sheeted with murder, and the Allahabad High Court refused to stay. ये तो अलग बात है. पीपी माधवन died in December 2024. नहीं तो पीपी माधवन सोनिया गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आज खुद को जेल की सलाखों के पीछे पाते. He abused and raped a Dalit woman, promising her marriage. तो यहाँ बैठकर भाजपा को नारी शक्ति. Let's bring in Dr. Joshi. He hasn't spoken. Dr. Joshi, how very nice of the Aam Aadmi Party to honor a woman MLA and you made Atishi the chief minister. आपने तो बाकी सारे पार्टीज को दिखा दिया कि कैसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, है ना? Pranesh,
I'm not going to trivialize this whole debate. I have certain very important questions. Atishi became chief minister strictly on merit. She is an Oxford scholar, Rhodes scholar, and one of the toppers of Oxford University. So let us not talk about her credentials. No, I am not. Let us talk about 1 minute. No, Dr. Joshi, precisely what I wanted you to say. Now listen to this. You made Atishi the chief minister, the caretaker chief minister, because Arvind Kejriwal as CM was not tenable. And when a question was asked, who will be the chief minister after election, the answer was Mr. Kejriwal. Then you forgot that Atishi went to Oxford. आपका हो गया तो मैं बोलूं सर? हाँ सर, जवाब दीजिए ना. क्योंकि आपने सिर्फ 15 सेकंड बोलने दिया है. नहीं, आप पूरा 1 मिनट लीजिए, 2 मिनट बोलिए डॉक्टर जोशी, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा. से सुन रहा हूं सर सबको, ठीक है ना? यदि इसी प्रकार से करना है तो फिर बताएं सर, क्योंकि शांति से हम जो पॉइंट्स रेस करने के लिए आए हैं वो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं. Simple questions that I'm going to ask. That's why I started by saying that I don't want to trivialize this debate, because I know the way you are going to, put forward your supplementary. Now, I'm telling you simply, how much is the population of women in this country? Does anyone have an exact data on that? Why are we not conducting any census on that? Let me not get started on Madhu Kishwar, and Subramaniam Swamy, because when you are talking about Atishi is a woman with impeccable integrity, and so is Arvind Kejriwal. So forget about all that. So I'm not going to get personal, because Aam Aadmi Party stands firm with the Women's Reservation Bill, but we doubt the intent of the Prime Minister, and we have our reasons. I'll wind up in next 30 seconds and let Sanju give an answer to that. What about demonetization? Kala dhan aane wala tha, aa gaya. What about petrol and diesel and LPG? What about 100 smart cities? What about bullet train? ये सब चीजें होने वाली थी. किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी. विकसित भारत कब बनेगा? 2047 में बनेगा. महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में मिलेगा. सेंसस हमने हमारे हाथ में है नहीं. हमें पता नहीं डेटा क्या है. हमें पता नहीं कि किस राज्य में कितनी महिलाएं हैं, और हम चले रिजर्वेशन करने, और वो भी स्पेशल सेशन के थ्रू. यदि आपके पास में डेटा है तो बताइए कि किस राज्य में कितने प्रतिशत महिलाएं, कौन से क्षेत्र में कितनी प्रतिशत महिलाएं, आदिवासी क्षेत्र में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, शहरों में कितनी है, ग्रामीण में कितनी है, तब जाके रिजर्वेशन की बात करिए. तो अभी नहीं करना चाहिए ना डॉक्टर जोशी. So you want this bill on, the bill on hold. सीधा कह दीजिए ना. Why are you confusing the viewer? कि अभी डेटा नहीं है, मत कीजिए. सब कुछ डेटा आने के बाद होगा. The intentions of the Prime Minister and the government, which has failed in every single task it has been bestowed with. And let me question Sanju Verma. Sanju Verma said that Sonia Gandhi, that's for Nikhil to answer, that she postponed in 2010 under the influence of C.K. Jafar Sharif, who was the then railway minister. That is the kind of gibberish that the BJP spokesperson get away with. C.K. Jafar Sharif was railway minister from 91 to 95. What are we talking about here? कुछ भी बोलते हैं national television पे, we get away with it. Have some facts. अच्छा, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए डॉक्टर जोशी. देखिए, we are for women empowerment, we are for women's reservation, but we doubt the integrity, the competence and the intent of the government. As simple as it gets. So, उसका solution क्या है? You want Arvind Kejriwal to become the chief minister and then implement this? Pranesh, you are a seasoned anchor. Come on, have some reasonable No, but if debate you doubt on this everything, Dr. Joshi, if you begin to doubt everything, then where are we headed? You come prepared for a debate. You have your points listed in front of you. The government needs to have the statistical data, ना भैया. यदि statistical data ही नहीं है, उसके बगैर आप करते रहिए जो भी करना है, बस बोलना ही तो है. नहीं है. मुझे हर्षवर्धन जी से भी एक जवाब लेना है, लेकिन संजू वर्मा आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, तो जल्दी से इनका जवाब दे दीजिए. हर्षवर्धन जी, आई एम कमिंग टू यू. बोलिए संजू वर्मा, दैट वाज फॉर यू. Yes. First and foremost, let me tell Aam Aadmi Party spokesperson, yes, C.K. Jafar Sharif was the railway minister between 1991 and 95. But I said that C.K. Jafar Sharif was the one who opposed the women's reservation in 2010. आपको शायद सुनने में प्रॉब्लम है. And let me tell you, ये जो आप Atishi is an Oxford scholar बोल रहे हैं ना, so let me tell you, I was a director at JP Morgan and your Atishi did not even know that Satya Nadella is the CEO of Microsoft. She said Satya Nadella is the CEO of Google. आपकी ऑक्सफोर्ड स्कॉलर को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का अंतर नहीं मालूम. आपकी ऑक्सफोर्ड स्कॉलर को सत्य नडेला और सुंदर पिचई का अंतर नहीं मालूम. जाकर पहले अपनी ऑक्सफोर्ड स्कॉलर को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का अंतर बताइए.
then give lectures to Sanju Verma. Now let me come to the moot point. People say मोदी सरकार ने औरतों के लिए क्या किया है प्रणेश जी? Let me say this. 57% of Jan Dhan bank accounts, women beneficiaries. 59% of Mudra account beneficiaries are women. More than 100%, growth has happened in Stand Up India, out of which 80% beneficiaries are women. 100% beneficiaries of Sukanya Samriddhi Yojana with 4.3 crore beneficiaries are young girls. And let me tell you that today more than 47% women on most government or corporate sector institutions are women. And my final point is this. पहली बार ये नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, इसलिए एक ट्राइबल महिला फ्रॉम द सांथाल कम्युनिटी कॉल्ड द्रौपदी मुर्मू became India's first tribal woman president. जबकि अरविंद केजरीवाल के चलते 10 seconds. There's a man called Bibhav Kumar who thrashed Swati Maliwal in the presence of Arvind Kejriwal. उस बिभव कुमार को आपकी केजरीवाल सरकार ने पंजाब में चीफ एडवाइजर टू हर्षवर्धन जी, देखिए हमने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई कह रहे हैं कि डेटा नहीं है, डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री के इंटेंट, उनका इंटेंट ही सस्पेक्ट लगता है, भरोसा नहीं है। आरजेडी के डॉक्टर राजन, वो तो क्या ही कहेंगे, उनके पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड चीख के कह रहा है। निखिल जैन के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस चाहती क्या है। तो ये होगा क्या सर? अभी जो 3 दिन का सेशन है उसमें अगर ऐसे ही चलता रहा? नहीं, देखिए प्रणय जी, मुझे लगता है ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है और इसको यूं भी समझिए कि इसी तरह के डाउट ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बना दिया है। क्योंकि डाउट तो ये भी था कि राम मंदिर नहीं बनेगा, डाउट तो ये भी था कि 370 तो कोई हटा ही नहीं सकता है, कौन हटा देगा भला। बड़े बड़े लीगल लिमिनरीज कहते थे, कह रहे तो सवाल ही नहीं उठता, 35A है, ये है, वो है, प्रेसिडेंट कहां से आएगा, विधानसभा हो गया ना। 3 तलाक कहते थे नहीं हो सकता है, हो गया ना। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको जब आप कहते हैं कि इंटेंट पर डाउट है तो नरेंद्र मोदी उसको साबित करते हैं। और कुछ लोग, राहुल गांधी की पार्टी के लोग, वो यूं ही हाथ करते रह जाते हैं, जैसे भी निखिल कर रहा है, इसी तरह सब करते रह जाते हैं। असली सवाल यह है कि क्या इश्यूज पर आपको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मूव कर रही है? क्या उसका जवाब देना आपको आता है? जो कुछ अभी आप कर रहे हैं, ये देश की महिलाओं को लग रहा होगा कि हमारे आरक्षण के रास्ते में ये बाधा बन रहे हैं, थोड़े इफ थोड़े बट लगाकर। और अगर ये सब कुछ होगा तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा, इसमें कोई मतलब डाउट तो रह नहीं जाता है। और निखिल ये भी कह रहे थे कि बीजेपी ने किसी महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री महिला को नहीं बनाया है। तो अब कर्नाटका में जो रिशफल की बात हो रही है, वहां कोई महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है, ये निखिल अनाउंस करेंगे अभी। निखिल, Ganesh, the Congress party was the party that gave the country its first woman chief minister, Sucheta Kriplani, the first woman governor, Sarojini Naidu, first woman prime minister, Indira Gandhi. And what did Narendra Modi do? Remove the only strong chief ministerial candidate of the BJP, Vasundhara Raje Scindia. I think your viewers why are don't enough to understand. you know, where is the Congress is in power in Karnataka? You have a government in Telangana, Himachal Pradesh, 3 states. You can't find a woman to be your chief minister, Nikhil. बीजेपी की तो 21 जगह सरकार है, बीजेपी की तो 21 जगह सरकार है ना। So I am not here to defend the BJP, but going by your logic that because they don't have a women chief minister, so the party is anti-women, then ask Priyanka Gandhi Vadra to be the leader of opposition, not Rahul Gandhi, just to make that point. But we'll have to move on. Let's see how the discussion in parliament unfolds. Viewers, let's shift our attention